So we are on our way to Haridwar and tire just burst, popped off the bus. इतनी गंदी किस्मत हो सकती है. This was the bus and the tire just burst open out on the road. I'm so tired right now. We've just reached to Haridwar and now we're moving towards Rishikesh. So it's not going to take much time, but still I think I still need some hours of sleep for my brain to function the way it's accustomed to behave. So we are at Rishikesh now, bus stop Rishikesh, and we're planning to have a room near Lakshman Jhula. So I'm very excited because I'll be seeing Ganga Aarti for the first time today. Hopefully, fingers crossed, I will be watching that live in action. So I'm very super excited. So we're now on our way to Lakshman Jhula from Triveni Ghat. हम गलत ऑटो में बैठ गए थे. गलत क्या, हम लोग त्रिवेणी घाट ही आए थे, बट टर्न्स आउट यहाँ पे इतना कुछ अच्छा व्यू के साथ सीनिक होटल्स वगैरह नहीं है. तो अब नाउ वी आर गोइंग टू लक्ष्मण झूला एंड वेलकम टू ऋषिकेश. सो वी आर इन ऋषिकेश और अभी हम यहाँ पे कुछ स्वीट खाने वाले हमने खाना खाया. अभी हमने जोमेटो करा, अभी ऑर्डर इन एंड इट्स गोइंग फन. यप. Yes, to the mountains. 12 बज रहे रात के and it's super fun. हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे पैदल पैदल आगे कि कहाँ जाएं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता. तो अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट है. अभी मतलब एक गली थी दिखी, उसमें घुस गए हम लोग और यहाँ पे से आगे का भी गंगा घाट. Yep, so that's that. This is what I love about this places like these. They offer you so much in exchange of so little. बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है and it just ऐसी हवा आ रही है like it feels like it soothes your soul, soothes your skin. I mean, not to sound dramatic, but it is all of this is true. So yeah, let's see where we go next. And I think मुझे लग रहा है थोड़ा आज और भी स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे यहाँ का जगह, क्योंकि हम जब आ रहे थे ना तो हमारे साथ हादसा हो गया था. त्रासदी हादसा. तो द बस वी वर इन, उसका द टायर पॉप्ड and it almost felt like the bus was about to and we're gonna die and stuff like that, but no, that didn't happen. So thanks to God we're here. Yeah. I mean, I hope I can place to live in Rishikesh or to do whatever you want to do in Rishikesh. Just be there. आ जाओ यार बस. अभी हमसे क्या गलती हुई, हम लोग ना रूम के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा सिरदर्दी ली. मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता, अननेसेसरी हम लोगों ने स्ट्रेस क्रिएट किया कि अरे यार ये रूम नहीं, बालकनी भी चाहिए, माउंटेन्स भी दिखनी चाहिए, धूप भी आनी चाहिए, प्राइवेट बालकनी होनी चाहिए. मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा हमने कर दिया ना कि हमने वो चीज़ लूज़ कर दी. क्या बोलते हैं, पेशेंस और एक रहता है ना फ्रेशनेस रहती है, वो चीज़ वी लॉस्ट इट. सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश. अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है. गंगा आरती अभी तक देख नहीं पाए. अगर आज देखनी होती तो मुझे जल्दी उठना पड़ता, बट मैं और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा थके हुए थे शादी से. सो दिस संडे वाज सपोज टू टेक रेस्ट. सो देयर इज दैट. सो अभी हम जा रहे हैं छत पे टू व्हाटएवर. ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस. मैंने ऑरेंज एंड बीटरूट कराया. यहाँ पे गेटिंग रेडी. फ्रेश फ्रूट्स. हल्दी मेरे पास भी
फ्रेश एकदम। जी आप बीटरूट वाला बनाओगे ना? जी बीटरूट बच्चा वो डालोगे इसमें? बहुत बढ़िया हो रहा है। रिव्यू दे देना भैया इसमें रियल फूड रिव्यूज कहाँ है? अच्छा आएगा लोकेशन पे मैप्स में? बिल्कुल भैया, हम लोग जो फोटो मैं उसमें से ले लूँगा। भैया इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है ये। ओ यार यहाँ फोटो खींच दे। लेट हो रहा है, हमें वो करना है। I don't know much, but this हरिओम हरिओम भैया There was a cat. So we decided to go to this cafe. It's called Vegan Shala. We don't know much, but yeah, we're going. Chale. This is how it looks. Oh, it's pretty. It's beautiful when you walk inside. It's just crazy beautiful with all this gravel on the ground, you know. पापड़, सैलेड, चटनी, सात्विक थाली भी है। There are these very cute spots they have made. This is called the Vegan Cafe, and this is I loved this one though. I mean, this is the best sitting slash dining area. You know, you can just take off your shoes and then relax here with like this shed. So basically, it's very beautiful. So I'm just thinking I'm thinking that we should just probably sit here instead, instead of sitting somewhere else, because I think it's very cozy and it's very grounding, you know, that you sit here with whatever you want, and yeah, it's pretty, it's very beautiful. The whole cafe has a very earthy vibes to it, and I think it's commendable for they have done so good with the space. So we're having breakfast in Rishikesh at Vegan Cafe, and this cafe has a very cozy, earthy vibe to it. And if you will come along with me this side, you know, यहाँ पे बाहर में like it's also very windy and it's actually chilly. My hands are freezing. It was a very trivial question that was in my mind that कि जो हमारे gods वगैरह थे, पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, सारे भगवान वगैरह थे, वो लोग ऐसे sheds में कैसे survive करते होंगे? Because I always thought that wind will seep through and it will be very cold for them. But if you come inside, you know, the air is very fresh inside of it, but it's not cold at all. So that was like brainer for me because I was not aware. I've never been into one of these sheds, like the proper sheds. But this place is very cute. So we've ordered ourselves regular coffees. They are like vegan friendly, so nothing there. They also are sitting inside if you want to have sit at a regular place. Ambience good. Oh my god, there's a cute doggy as well. And his name is... Okay. So he's Scooby, and Scooby likes his personal space, so we're not going to bother him, but he's adorable. He's
he's as poised as the Ninetales Pokemon that we've seen. If you want, you can sit inside. The place is amazing, and you must visit here. If you like, if you're anyone like me or my friends who like low key and chill space. Yeah. So coffee is here, and I must tell you this looks. I mean, मेरे तो देख के मेरे को इतना wind, oh god. Coffee, I just हो गया सबका. It's like मेरी कॉफी में एक अलग सा कुछ ऐसा सेमी मून टाइप बना है. समय मून नहीं है वो छा है दूध का वो जो तर ऐसे आते में धार आती है Coffee is nice. एक साइड कर अपना फोन आलू पराठा भी आ चुका है. आलू पराठा बहुत सुंदर दिख रहा है. आलू प्याज पराठा आलू प्याज पराठा आलू एक साइड कर अपना जरा भाई ठंडी भी हो गई कॉफी ना उसको वेट करो ये कॉफी भाई आज लग रहा है मुझे कि कॉफी है Depth. Better than pasta, pizzas, or anything. Fulfilling. एकदम क्रिस्प लेयर है. रेगुलर ब्रेड्स नहीं है. रिव्यू भी दे रहा है तो फूड ब्लॉगर है इसमें नमक तेज है सबका इसमें डाल दो. मैगी भी आ गई गाइस फाइनली. सो एक्साइटेड. It looks like this. कैसी है? बहुत ज़्यादा So we had our breakfast. It was amazing. And now we are hostel, or you can say room hunting. Wish us luck. Wow. It's like you would just want to stand at every wall, next to every wall, and get photographed because the graffiti is too freaking good.